Honorable President of India, respected dignitaries, and my fellow officer trainees, a very good morning to all of you. I, Nikunj Jindal, a probationer from the 2020 batch of the Indian Defence Service of Engineers, would like to express profound gratitude to the Honorable President of India for sparing valuable time from a demanding schedule. I hold it as a great honor and privilege to extend a warm welcome to everyone present here. I vividly remember my early school days when I was introduced to the term the President of India. The President, often referred to as the first citizen of the country and the Supreme Commander of our three armed forces, held a position of immense significance in our Constitution and in the heart of our great nation. As a child, I aspired to be the President myself. As I grew older, my dreams evolved, and I had the more realistic goal of meeting the President once in my lifetime. Little did I know that this dream would be realized on the grandest stage of all, right here inside the Rashtrapati Bhavan. And that too, as a Group A officer of the Military Engineer Services. Today, it is an unparalleled privilege for me, alongside 34 officer trainees from the 2020 and 2021 batches of the Military Engineer Services, to be in the august presence of our Honorable President. To commence today's proceedings, may I kindly request our esteemed Defence Secretary, Shri Girdhar Armane, IAS, to deliver the welcome speech. भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कुछ समय निकालकर MES के ग्रुप ए ट्रेनी ऑफिसर्स को मिलने का अवसर प्रदान किया। इस क्षण हमारे MES के इन भावी युवा अधिकारियों के लिए बेहद गर्व और उत्साह का विषय है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का मार्गदर्शन व आशीर्वाद इन अधिकारियों के लिए भविष्य में पथदर्शक तथा दिशा निर्देश का कार्य करेगा। वर्ष 2020 और 2021 में चयनित MES अधिकारियों का यह 5वां बैच है, जिन्हें पुणे, हैदराबाद और नई दिल्ली में 3 चरणों में विभाजित 40 सप्ताह की इंडक्शन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। कुल 35 अधिकारी इस बैच का हिस्सा है, जिनमें से 3 महिला अधिकारी हैं। इनमें 28 अधिकारी IDSC तथा 7 अधिकारी सर्वेयर कैडर के से है। इन ऑफिसर्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग इन्हें सरकारी नीतियों तथा संचालन की गहरी समझ प्रदान करने, उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देने और नियमित नियुक्तियां मिलने पर उन्हें परिपक्वता के साथ निभाने के लिए उद्देशित है। इस ट्रेनिंग के पश्चात इन अधिकारियों की देश भर में फैली रक्षा मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों, उप इकाइयों, भारतीय सेना के सभी अंगों, तटरक्षक बलों, DRDO तथा अन्य महत्वपूर्ण संगठनों में निर्माण कार्य एवं इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। मैं रक्षा मंत्रालय की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का एक बार पुनः इस अमूल्य अवसर को प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यह अवसर इन सभी युवा अधिकारियों को और अधिक ऊर्जा एवं लगन से हमारे देश में रक्षा तंत्र को तथा देश के नागरिकों को सुरक्षा एवं अपेक्षाओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, वह भारत देश हमारा है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक के समक्ष अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है, जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। माननीय महोदया, मेरा नाम नेहा सैनी है। मैं सैन्य अभियंता सेवा विभाग की 2021 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मैं राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे की निवासी हूँ,
जहां प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं महिलाओं की साक्षरता दर आज भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूं उन्हीं शासकीय विद्यालयों तथा तकनीकी महाविद्यालयों की जहां से शिक्षा ग्रहण कर मैं राजपत्रित अधिकारी बन पाई। मैं आभारी हूं अपने माता पिता की, जिन्होंने लड़का और लड़की में भेद ना करते हुए मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को अपने जीवन का प्राथमिकता बनाई। उन्होंने मुझे अपने गांव, अपने संस्कृति और अपने राष्ट्र पर सदा गर्व करना सिखाया तथा राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने के काबिल बनाया। आज मैं अपने गांव के बहुत सी युवक युवतियों की प्रेरक बन चुकी हूँ। वे सब भी मेरी तरह अपने माता पिता का नाम रोशन कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। महोदया, एक प्रशिक्षु से एक जिम्मेदार लोक सेवक बनने का सफ़र 3 चरणों में पूरा होता है। प्रशिक्षण के पहले चरण की शुरुआत 27 फरवरी 2023 को सैन्य अभियंता कॉलेज पुणे से हुई। सैन्य अभियंता विभाग अहर्निशम सेवामहि के सिद्धांत पर उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ रहा है तथा जल, थल एवं वायुसेना के पृष्ठवंश के समान कार्य कर रहा है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में महोदया, हमें विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ तथा हमने विभागीय सिद्धांतों को अंतर्निहित किया। हम समझते हैं कि देश जिस तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें अभियांत्रिकी तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः प्रशिक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत हैदराबाद के इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से की गई, जहां हमें उन्नत अभियांत्रिकी तकनीकी के बारे में सम्यक ज्ञान प्रदान किया। इसके उपरांत 14 सप्ताह की अवधि वाले पाठ्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर MCR अचाडी संस्थान तेलंगाना से हुई। संस्थान में दिन की शुरुआत प्रातःकालीन PT एवं योगासनों से हुई, जिसने हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं सचेत बनाया। एक सफल अधिकारी का व्यक्तित्व उसके गुणों की पराकाष्ठा होता है। हमें ऐसे मूलभूत गुण अनुशासन, जवाबदेही तथा अखंडता का भली भांति रूप से अभ्यास करवाया गया। शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा भारतीय लोक प्रशासन, कानून व्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं कार्य जीवन संवर्धन जैसे विषयों का पर्याप्त ज्ञान प्रदान करवाया गया। वहीं पाठ्येतर एवं सांस्कृतिक गतिविधियों ने साथी गणों में संघ भावना को विकसित किया। इसके साथ ही विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलने एवं उनके अनुभवों को जानने का अवसर मिला। महोदया, 1.5 माह की अवधि वाले तीसरे चरण की शुरुआत अक्टूबर 2023 को प्रबंधन विकास संस्थान गुरुग्राम से हुई, जहां कूटनीतिक प्रबंधन तथा वित्त प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर मिला। इसके उपरांत हमें अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखा परीक्षा केंद्र नोएडा में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तत्पश्चात हमारी प्रविष्टि विभिन्न क्षेत्रों में कर दी जाएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया, इस प्रशिक्षण के पश्चात हम स्वयं को अधिक कार्यकुशल एवं राष्ट्र निर्माण में समर्पित पाते हैं तथा देश के विकास एवं समृद्धि की दिशा में स्वयं को नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हम नव भारत के सृजन में उचित योगदान देने में समर्थ रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now I would like to invite my fellow officer, Mr. Vaishnav Kumar, for sharing his training experience. Honorable President of India, esteemed dignitaries and fellow officers, a very good morning to all of you. I am Vaishnav Kumar, MES Probationer of UPSC 2021 batch. On behalf of my fellow trainees, I would like to share our perspectives on the training journey that spanned across 4 diverse regions of India, covering 12 eminent institutions. Honorable President, since MES operates in challenging terrains throughout the nation, hence it was imperative for our batch to embrace the training diligently. We aimed to acquire the essential technical and managerial skills to confront these challenges effectively. I believe I speak for everyone present here when I say that this journey has been truly transformative. This training has not only enhanced our personalities, but also reshaped our perspectives, equipping us to better serve our nation. The 40 weeks induction training program was meticulously covered by my fellow officer. The training program was comprehensively structured, duly including evolving technologies and global norms, in addition to aligning the organization goals and vision with the government initiatives, rules and policies, thereby
empowering us to adapt to the societal needs. In sync with our Honorable Prime Minister's emphasis on digitization, we acquired relevant software skills at the CAD Center Pune, ensuring that MES remains in step with the country's digital evolution. Our training is not solely focused on increasing technical and managerial knowledge, but also on instilling the cherished ideals of the preamble of the Indian Constitution. Training at Dr. MCR HRD Institute of Telangana acquainted us with Indian history, culture, law, and polity, fostering democratic values as we worked to serve the Indian citizens. Our visit to Telangana's villages provided invaluable insights into addressing the barriers that hinder policy implementation at the grassroots level. Trekking in the Nilgiris taught us the dynamics of teamwork and the realization of inner strength. In line with our Honorable Prime Minister's focus on renewable energy and making India energy independent by 2047 and achieving net zero by 2070, our training at the National Institute of Solar Energy will equip us with the skills needed to harness solar energy within military installations and making India a global power in the solar energy. Finally, our training will conclude at Pride, where we will learn about the functioning of our Constitution, including a visit to the Parliament. Honorable President, MES is striving to adopt latest global construction practices, such as effective space management, construction using 3D printing, green technologies reinforcing energy efficiency, and establishing smart cantonments with a focus on reducing carbon footprint. The future of the organization and the growth of our nation rests on our shoulders. And as the torchbearers of our organization, it is our responsibility to participate and keep pace with the constant technological changes to achieve the mandated goals of the government. Honorable President, I am confident that after this rigorous training, we are now more than equipped to dedicate ourselves to the MES motto, Quest for Excellence, and to our great nation, serving with excellence day and night. Thank you. Jai Hind. Dear probationers of Military Engineer Services, at the outset, I congratulate you for your selection in the Military Engineer Service. This prestigious service gives you an opportunity to serve our armed forces and the country through excellence in the field of engineering. Your presence here signifies your commitment and dedication to the development of the country. I am told that officers present here today belong to Indian Defence Service of Engineers and Surveyors cadre of MES. As we know, MES is a premier construction department which provides dedicated engineering support to the defense forces, enhancing their operational preparedness. MES carries out construction activities for residential and technical office buildings, hospitals, roads, runways, and marine structures across the country, including the border areas. Construction sector is quite dynamic, and you have to keep yourself abreast of the latest technologies for giving your best in the field. Dear officers, you are going to be part of the workforce of this important organization as an engineer. The role of an engineer is not just limited to calculations, designing, and construction. It is much broader and includes connecting communities, realizing their dreams, and shaping the future. Young officers like you held in your hands the power to create the physical infrastructure that is robust and sustainable. As young officers who have just entered the service, you must be well aware of the environmental challenges and issues of climate change. It is your duty to design and construct such structures which are eco-friendly, sustainable, and promote the increased use of renewable energy. Green engineering is the need of the hour. I am happy to note that MES is contributing in reduction of national carbon footprints by adopting various measures. MES is ensuring construction of
Griha rating compliant structures and has get set up solar power plants. I am confident that the young officers present here today will give a further push to these efforts by bringing in new ideas, new energy, and a lot of enthusiasm. Dear professionals, a long career lies ahead for you. Today, I would like to urge you all to work with sincerity, integrity, and perseverance. These virtues will help you in your pursuit of excellence. You should always strive for the highest standards of quality, safety, and innovation. Your projects must stand as testaments to your dedication and commitment. I appreciate this MES has revised its scales of accommodation and defense wars procedure for achieving higher standards of quality, user satisfaction, and safety in their projects. The use of latest and advanced technologies is very important in all fields, especially the field of engineering. Today, the construction industry is undergoing transformation through research and innovation in areas such as 3D, using sustainable materials, and building smart infrastructure. You should be at the forefront of these dynamic developments and ensure that your work also reflects the latest advancement. I am happy to learn that MES is using cutting-edge construction technology in its project. The field of engineering is ever evolving, with new technologies and methods emerging at an astonishing pace. You need to be adaptive and ready to embrace change. At a time when our country is setting new benchmarks in various areas at global level, you should be proud that you are part of a service that is committed to serve the country and its armed forces and is adapting itself to the changes happening at national and global stage. Dear officers, you are privileged to have got an opportunity to provide service and support to the valiant soldiers who are always ready to lay down lives for the motherland. Dear officers, I shared this earlier with your senior batch of officers and reiterate today the need for higher number of women officers in MES. We have seen an increase in participation of women in armed forces. Women are taking up challenging assignments and delivering impressive performance in all fields. I hope that in the coming years, more women would join military engineering services also. In the end, I convey my best wishes to you for a bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.